In previous lecture, we concluded with AS2, that was valuation of inventories. Now, in today's lecture, we'll start with another practical standard, and that is Accounting Standard 7, Construction Contracts. Correct? Construction contracts. First of all, you should understand the background of this accounting standard. See, this is our paper number 1, Advanced Accounting. Main syllabus of Advanced Accounting is based on accounting standards. We have already learned 2 accounting standards and AS13 also, so 3 accounting standards. This is 4th one, correct? Yeah. So every standard is a new chapter, so you will understand everything, don't worry. I'll proceed further. First lecture होगा. So now this standard, standard is applicable to construction contracts. Matlab, if we got a contract for construction of a bridge, correct, and that construction activity will take more than one accounting period, means long period, then this standard will be applicable to that. Correct? I can say standard is applicable to contractor, the person who will conduct that activity of construction. Standard is applicable to that person. Correct? What is the main objective of the standard? You know, to determine profit or loss of each and every contract, each and every construction contract. I got one contract for construction of bridge, flyover. I got I can say contract for construction of Atal Setu, Worli Sea Link, Coastal Road. I got contract for this construction of this. It will take number of years. As a contractor, how to do accounting of the same? I will apply AS7. And main objective of AS7 is what? Determination of profit or loss. Profit or loss find kar. Agreed? Hey, bolo. Profit or loss calculation, determination of profit or loss of each and every contract is the task in this chapter. I hope you understood this one. Yeah, no issue. Correct? And standard is applicable to contractor. Contractor ko standard is applicable, and contractor will determine what? Profit or loss on each and every contract. Correct? Very interesting topic, practical topic. Main concentration is on what? You know, how to recognize the revenue in construction contract. Yeah, please. How to recognize revenue in construction contract. How to recognize expense in construction contract. Example देता हूँ सुनना. I got one contract for construction of a flyover which will take 3 years, and the contract price is 100 crore. Now that 100 crore is my revenue. When should I recognize? In first year, in second year, or in third year, or as and when it is received? Means you are saying on accrual basis. How to decide how much is accrued in first year? How to decide? Jitna mila utna means you are saying on receipt basis. So in first year I did not get any revenue. Matlab anything, I can say any remuneration. I have just spent some amount, but I did not get anything. So I will not recognize revenue. Bola.
Means how to recognize that receivable, how much is receivable, how to determine. 100 crore is contract, as much as spending, means you are saying it is based on cost. So in first year, if I have spent 30 crore rupees, so 30 crore is my revenue also, 30 crore is my cost also, profit 0. You are saying the same. So whatever you spend, that is your revenue. So 0 profit in first year, 0 profit in second year, and whatever profit is remaining, that is in last year. Don't you feel it will not give you true and fair view? नहीं वो ठीक है, रेवेन्यू कितना बुक करेंगे, हाउ मच रेवेन्यू इज बुक्ड इन फर्स्ट ईयर, पीएनएल में क्रेडिट में कितना लिखेगा, divide by 3, 100 crore should be divided by 3, 33.333, that is first year, second year, third year revenue. फर्स्ट ईयर में काम ही नहीं हुआ है, बोलो अभी फिर भी रेवेन्यू बुक करेगा, समझ रहा है? ऑल दीज एरियाज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस. लॉजिकली क्या होना चाहिए, when how to recognize revenue, accrual basis agreed, but how to decide how much is accrued, how much is accrued कैसे डिसाइड करो. हाँ तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, नो रेवेन्यू, डायरेक्टली इन थर्ड ईयर, देन इट इज नॉट अक्रूवल, so you are saying accrual. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक्सपेंस बुक करने का बट रेवेन्यू बुक नहीं करने का, यू मीन टू से. क्यों नहीं है, 100 करोड़ मेरा 3 साल का रेवेन्यू है, 1 साल का रेवेन्यू थोड़ी है. आई एम परफॉर्मिंग ऑपरेशन एक्टिविटी इन 3 years. You mean to say in first year cost will be debited to P&L but no revenue, so loss. Second year cost is debited to P&L, no revenue, loss. Third year we will have huge profit. How will you convince your investor on that basis? एक पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हो जाएगा कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट नए हैं, फर्स्ट ईयर ही है, तो पूरा P&L लॉस बताएगा, अमोर्टाइज करेगा, मतलब एसेट में बताएगा एंड देन अमोर्टाइज. मतलब इक्वली यू वांट टू डिवाइड. हाँ मतलब 100 करोड़ इज माई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कोट करेगा उस, दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट. मतलब कैसे, वो बोल रहा है डिवाइड बाय 3 कर दो सब 3 साल का. हाँ बोल, बरोबर है बोल. So can I conclude revenue should be recognized on percentage completion basis? जितना टका काम हुआ उतना टका रेवेन्यू बुक करने का, परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. समझ रहा है? फर्स्ट ईयर में 30% काम हुआ, सो 100 करोड़ का 30% विल बी माई रेवेन्यू, दैट इज 30 करोड़. सेकेंड ईयर में 40% काम हुआ तो 40 करोड़ इज माई रेवेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, सर हाउ टू डिसाइड परसेंटेज कंप्लीशन. तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, विल टॉक अबाउट इट. बट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन व्हाट बेसिस, परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. पूरा स्टैंडर्ड उसके डायरेक्शन में लेके जाए. कुछ समझा? AS9 is talking about revenue recognition. AS9 that is talking about revenue recognition. Which revenue other than AS7 revenue? Other than AS7 मतलब other than construction contract revenue, because construction contract का revenue is considered under AS7. बाकी सारे revenue will be considered under AS9. AS9 will be our next standard जो हम consider करेंगे. कुछ समझा? So I am giving you the background of the standard. Standard is applicable to construction contracts, correct? Contractor, standard is applicable basically to a contractor. Contractor will determine profit or loss. Agreed? Hello? Chalo, shall we proceed?
I'll start with definition, applicability, and objective. You have to write it down along with me. Yeah. So which are the areas we will cover in ES7? Definition, applicability, and objective. Types of contracts, combining and segmenting of contract, provision, and then disclosure. Done? Shall I? पहले डेफिनेशन का बात करेंगे. बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? बोलो. Construction contracts are specifically negotiated for the construction of a
सिंगल एसेट। क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? क्या होता है? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड, नेगोशिएटेड मीन्स डिस्कस बिटवीन टू पार्टीज, करेक्ट? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल एसेट। एक सिंगल एसेट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एसेट। क्या रहेगा सिंगल एसेट में? क्या लिखा? फ्लाईओवर, ब्रिज, so construction of a single asset. Construction contracts are specifically negotiated for the construction of a single asset, that is flyover, bridge, dam, bungalow, etc. Or a combination of interrelated assets. Construction of single asset or combination of interrelated assets, like construction of refineries, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स, जिसमें एक एसेट नहीं रहता, एक के साथ बहुत सारे इंटरकनेक्टेड एसेट्स रहते हैं, सब कंस्ट्रक्शन साथ में करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दैट इज अगेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये डेफिनेशन से क्या हो रहा है मालूम है? ES7 में क्या क्या कवर हो रहा है वो ये डेफिनेशन बता। डेफिनेशन इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एसेट। एक एसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, AS7 में कवर होगा। इंटर रिलेटेड एसेट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, AS7 में कवर होगा। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट लॉजिकली स्पीकिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। प्रॉफिट और लॉस, वी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन दिस चैप्टर। प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट P&L, विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बट प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए वी विल कंपेयर रेवेन्यू विद कॉस्ट। इफ इट इज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। इट इज वेरी सिंपल, डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम, then it is very simple to determine profit or loss. But if contract is for more than one accounting period, then how to recognize revenue, how to recognize cost, that is guided by AS7। ये तुमको कुछ समझता है क्या? बैठे हो के सोए हो, बैठे बैठे सोए हो ऐसा लग रहा है, हैंग हो जाते हो मोनिल, हिल तो सही, एयर इंडिया लग रहा है, ध्यान दो। ओके ओके जाने दो, तू અહીંયા આવી જા મોનિલ, બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે અહીંયા। ના પછી આવશે નહીં, હે નહીં છેડ નહીં તું એને, મમ્મીને બોલાવશે, ધ્યાન આપ અહીંયા, नहीं छेड़ने का मम्मी, नहीं छेड़ते। सुनो इधर मोक्षी, ध्यान दो बेटा। So definition by add करना है। Construction contracts are specifically negotiated for the construction of single asset और combination of interrelated assets। ये सब AS7 में कवर होगा। और क्या आएगा? Rendering of services, rendering of services which are directly
related with construction of assets. Example, architect services. क्लियर एवरीबॉडी? क्या रहेगा? आर्किटेक्ट का सर्विस, प्लम्बर का सर्विस, इंजीनियरिंग का सर्विसेज। बंगलो बनाने के लिए आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन करके दिया। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बंगलो वी रिक्वायर प्लम्बर, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बंगलो वी रिक्वायर इंजीनियर्स, and their services are rendered which is in connection with what? Construction of that asset. Even those services are covered under AS7. सब AS7 में कवर होगा। डू यू अग्री विद दिस? ये बोलो यार, क्या टाइम पास है। और डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स। ये समझा कि नहीं? डिस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स समझा कि नहीं समझा? पक्का? एक मिनट, एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम? हाँ, व्योम का ऑलरेडी एक बंगलो है। ही हैज वन बंगलो, ओल्ड बंगलो। नाउ ही वांट्स टू डिमोलिश दैट बंगलो and he wants to construct a new bungalow on that. So he had given that contract of destruction and restoration to him. उसको बोला कि you destruct that bungalow and whatever debris will come, you have to remove it. That contract, destruction contract is given to him. Even that contract is covered under AS7. Then he had given me a contract for construction of bungalow, new bungalow on that particular land. That contract is also covered under AS7. Then he had given architecture contract to him. So you design a particular bungalow as per my requirement. Even that contract is covered under AS7. ये गया पक्का? So definition पहले, I hope you remember the definition. बायट होएगा ये? Construction contract. Quickly, construction contracts are specifically negotiated between two parties, agreed, specifically negotiated for the construction of a single asset or combination of interrelated assets, correct, or for rendering of services which are in the connection with construction or destruction and restoration of assets. All these three contracts, all these three activities are considered under AS7. समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? पक्का? सेकेंड पॉइंट, इस सीक्वेंस में बात करते रहना आपकी काफी एप्लीकेबिलिटी। कल भी लेक्चर है ना अपना, और सैटरडे है कि नहीं? मेरा नहीं है, मतलब कल हम लोग ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम कंप्लीट कर देंगे। आज थियरी हो जाएगा, मे बी एक दो सम होएगा छोटा छोटा, देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल, करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस स्टैंडर्ड। यस मैम? हाँ, 3 तक। वेरी हैप्पी। क्यों 3 तक है? बिकॉज आई हैव नेक्स्ट लेक्चर एट मेलो। यहाँ वो जो भी है सर, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपको जो करने का है करो। हम 3 बजे के बाद नहीं बैठेगा सर, हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है। 3 के बाद हम घर जाता है, सो जाता है, बराबर है? चलो सुनो, नया मूवी कौन सा आया? सारे जमीन पर ना, क्या? अभी कल ही आ रहा है ना, फ्राइडे, कल आता है। वो 3 बजे क्या टिकट निकालने जाने वाली है? नहीं,
ओ हाँ सर, सोच पे थोड़ी टैक्स लगता है, आप सोचो दिन भर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आई लाइक योर एटीट्यूड। एटीट्यूड जोरदार था। मैं बोला सी आई हैव कनेक्टिंग इट। सर हमको क्या फर्क पड़ता है? 3 के बाद तुम कुछ भी करो, हमको 3 बजे छोड़ देना सर, उससे ज्यादा हम सुन नहीं पाएंगे। करेक्ट। आई लाइक दैट, दिस इज प्योर प्रोफेशनल एटीट्यूड, यू नो। आई लाइक दिस, वेरी गुड। इसीलिए इधर ज्वाइन किया। सुपर, वेरी गुड। 2 बार पास हो गया बेटा तू। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी बोलो, स्टैंडर्ड किसको एप्लीकेबल है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टमर। करेक्ट। उसको ये स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अकाउंटिंग करना भी नहीं। वो बंगलो बन जाएगा फिर अकाउंटिंग करेगा। बंगलो अकाउंट डेबिट टू बैंक, वॉट एवर इट इज। अग्रीड? या सो स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा उसको? AS10 पीटी, क्योंकि वो बंगलो उसके लिए क्या है? पीटी, फिक्स्ड एसेट्स। तो वो AS10 अप्लाई करेगा। हम कौन सा अप्लाई करेंगे? AS7, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रैक्टर। डू यू अग्री विद दिस? या राइट डाउन एप्लीकेबिलिटी। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट डाउन, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is applicable to contractor and not to contracting. Contractor and not to contractee. Contractee के ब्रैकेट में कस्टमर। आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव बोलो, स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट। राइट डाउन फर्स्ट, determination of profit or loss of construction contracts on year to year basis. On year to year basis. Understood? Here. Yeah. Second, allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period. Allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period in, क्या बोल रही है? Allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period in which construction work is performed. समझा? Everybody clear? Any doubt? Say no. No. Very good. 1 मिनट, 3 पॉइंट क्लियर। फटाफट एक बार रिपीट कर दो, साथ में ही बायट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दिया ना, इन नेक्स्ट 1 and 2 hours, नहीं सॉरी 1 hour 45 minutes वी कैन रिमेंबर एंटायर कॉन्टेंट। करें? वो डांटती है 3 के ऊपर। नाइस, घर जैसा फीलिंग आया, मालूम है? देखो नहीं समझा, जाने दो। बता हंसता, उसको बता अभी डिटेल में।
अरे घर पे भी लोग डांटते हैं, इधर भी ये डांटती है, जाने का किधर, सुन इधर, मैं किडिंग, हाँ ऑफ कोर्स, शी इज वेरी प्रोफेशनल यू नो, बिग फोर वाली है, सुना। Okay, first definition. Construction contracts are specifically negotiated for the construction of a single assets or combination of interrelated assets or for rendering of services or for destruction or restoration of assets. ये definition. Standard is applicable to contractor. I understand your feeling. Correct. Standard is applicable to contractor. Contractor will apply this accounting standard to determine profit or loss, that is the objective, and allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period in which construction work is performed. याद रहेगा। आगे 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन विच इज वेरी सिंपल, types of contract. There are two types of contract. First is fixed price contract. Second, cost plus contract. लिखो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ये फिक्स्ड प्राइस, तो ही हैड गिवन मी कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो एंड वी हैव डिसाइडेड म्यूचुअली दैट दिस विल बी द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। दूसरा कौन सा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अंडर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, आई विल इंकर कॉस्ट and accordingly he will reimburse that particular cost to the contractor along with certain fixed percentage plus certain fixed percentage। समझाइए। लाइक ये बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बंगलो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आई कैन से 1 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर है, so I will spend that particular amount and he will reimburse that amount and I will say whatever amount you are paying, pay 10% extra because that 10% is my profit margin. Normally this type of contract we are giving to interior decorators. If you will give work to contract work to interior, ये इंटीरियर क्या करते हैं पता है, काम कैसे लेते हैं, वो बोलते हैं सर जो भी खर्चा होगा ना उसका 10% मेरे को दे दो। Then they will take you to costly shops where you will find costly materials. करेक्ट। उधर से भी कमीशन मिलता है और हमारे पास से भी 10% लेंगे। उनके पहचान वाले रहेंगे सब सामने, बोलेगा इधर लेटेस्ट मटेरियल लेटेस्ट डिजाइन सब इधर मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी। मेरा तो सालों से उसका साथ रिलेशन है, मैंने कितना काम किया उनके साथ, नो चीटिंग नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। हाँ डिस्काउंट भी दिलाऊंगा मैं, उधर उधर डिस्काउंट भी दिलाएंगे प्लस उस पर मार्जिन। सो नॉर्मली इंटीरियर वाले ऐसे खेलते हैं, ह्यूज मार्जिन दे हैव एंड दे आर अर्निंग एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। क्यों, अच्छा अच्छा डिजाइन ही करने का है ना सिलेक्ट, वो भी वो कस्टमर को लेके जाके सिलेक्ट करेंगे, अपने को तो फिट करना है। करेक्ट। एनीवेज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस इज फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में whatever cost will be incurred by contractor that will be reimbursed by contractee plus certain fixed percentage।
That type of contract is cost plus contract. Do you agree with this? Write down. Fixed price में लिखो ग्राफिक. Under this, contractor agrees to a fixed contract price. Contractor agrees to a fixed contract price. Clear? Second branch. Cost plus में लिखो. Under this, contractee reimburses the cost as defined plus fixed percentage of such cost. इधर तक क्लियर एवरीबॉडी? समझा नहीं समझा? क्या कंप्लीट किया? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ये बोलो जल्दी यार, ऐसा तुम लोग प्रार्थना सभा में आया ऐसा बैठा है यार, कुछ तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखो. हद हो गया यार, थोड़ा ऐसा एक्साइटेड रहने का लाइफ में. मस्ती तो कर कहीं मुक्षी. तो क्या मस्ती करो सर, आप डांटते हो. हाँ, कौन कंप्लेन? क्या बोला? वो डरता है आपसे. हाँ सर, पूरा पढ़ाई दो, खत्म करो जल्दी. इधर कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट combining contract and segmenting contract. इस पे क्वेश्चन है, पहले मीनिंग पढ़ेंगे. लिखो, कंबाइनिंग में लिखो, when many contracts would be treated as a single contract. समझा कुछ? अभी सेगमेंटिंग में लिखो, सेगमेंटिंग में लिखो, when contract covers number of assets and the construction of each asset should be treated as a separate construction contract.
should be treated as a separate construction contract. Correct? Yeah, clear? Now, how to identify? We have few questions based on this. In that, we have to identify whether it is combining contract और segmenting contract. एग्जाम्पल दे देता हूं, सुन लो इधर. मैं LNT है, करेक्ट. मेरे को मेट्रो लाइन 1 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मेट्रो लाइन 2 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेट्रो लाइन 3 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला. एंड दीज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, तीनों का मैंने कंबाइंड प्रपोजल दिया था, कंबाइंड नेगोशिएशन किया था, and all 3 contracts are interrelated with each other, then it is called as combining contract. ये 3 कंडीशन दी है. सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स तीनों मेट्रो लाइन 1 का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट, प्रपोजल सबमिटेड सेपरेटली, नेगोशिएशन डन सेपरेटली, करेक्ट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आइडेंटिफाइड सेपरेटली, लाइकवाइज कॉन्ट्रैक्ट 2 का, मेट्रो 2 का, लाइकवाइज मेट्रो 3 का, सब अलग अलग रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कंबाइनिंग. अग्रीड? 3 कंडीशन है, लिखो फर्स्ट. एक मिनट, आई विल टेक 1 मिनट, वेट. आगे बढ़ते हैं. देखो इसीलिए ना कि कैसा ये सब एमसीक्यू में आता है. सुनो, तू आज तक क्या बोल रही है लेक्चर में? टाइम, एक मिनट, स्टार्ट करें वापस. ये फटाफट सुनो. कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? व्हेन मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रुप ऑफ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, दैट इज कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट. सेगमेंटिंग में क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एसेट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट. हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन? 3 कंडीशंस. चलो कंडीशन नंबर 1 लिखते जाओ फटाफट. कंडीशन नंबर 1, the proposal submitted should be for all assets the proposal submitted should be for all assets put together. यहाँ पे the proposal submitted should be for each asset. मतलब इसके 3 कंडीशंस हैं, इसके भी 3 कंडीशंस हैं. डिफरेंस मतलब क्वेश्चन आएगा, फाइंड करो कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि सेगमेंटिंग. तो ये कंबाइनिंग रहेगा तो ये लिखने का स्टोरी, सेगमेंटिंग रहेगा तो ये लिखने का, करेक्ट. ये क्लियर? सेकेंड, द नेगोशिएशन
The negotiation should be done as a single package. The negotiation should be done for each asset. Third, contracts should be interrelated or interlinked. Third, cost and revenue of each asset can be identified. तीनों फुलफिल होना चाहिए बेटा. प्रपोजल सबका सेपरेटली सबमिट करेंगे. प्रपोजल में क्या सबमिट करेंगे कि ये मेट्रो लाइन सेपरेट, इसका डिस्कशन, इसका नेगोशिएशन सेपरेट रहेगा, इसके कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेपरेट रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, सेगमेंटिंग है. सबका प्रपोजल साथ में दिया, नेगोशिएशन साथ में किया, एंड दे आर इंटर रिलेटेड, देन वी कैन से इट इज अ कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तीन कंडीशन क्या है? क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना चाहिए. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस एवरीबॉडी? ये फटाफट आंसर दो, अभी प्रैक्टिकल पार्ट चालू करूंगा. यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? सच्ची समझा? क्या करेंगे अभी आप? इतना मेरे को पहले बायट करके दो क्विकली, 5 मिनट्स. मेन क्या था? डेफिनेशन तो ठीक है, बायट हो गया. एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ठीक है. करेक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सिंपल है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग. फटाफट बायट करो तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आएंगे. चलो डन. एक बार रिपीट करते हैं, सुनो फटाफट. What do you mean by construction contract? Come on. Construction contracts are specifically negotiated for the construction of a single assets or combination of interrelated assets, or for rendering of services which are related with that construction. Correct? And last, destruction or restoration of asset. इसको क्या नाम दिया? Construction contracts. Correct? चलो, applicability. Standard किसको applicable है? Contractor को applicable है. Correct? Objective. Determine profit or loss on contract. Do you agree with this? पक्का. दूसरा, allocation of contract revenue and contract cost. Correct? On year to year basis. याद रहेगा? Okay. उसके बाद में types of contract दो. Fixed price contract, cost plus contract. Fixed price में क्या fixed रहेगा? Price of contract is fixed between two parties. And cost plus में whatever cost will be incurred by contractor, contractor will reimburse that plus certain percentage. समझा कि नहीं समझा? पक्का? Any doubt? Say no.
नो, वेरी गुड. कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट. कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा बोलो? व्हेन मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट. तीन कंडीशन थे. प्रपोजल सबमिटेड, कंबाइंड, करेक्ट, टुगेदर फॉर ऑल एसेट्स टुगेदर, देन negotiation done together for all assets together, and they are interrelated and interlinked, then we can say this combining contract. Segmenting में क्या था? Where contract covers construction of number of assets, and construction of each and every asset will be considered as separate contract. Team proposal submitted separately, negotiation done separately, cost and revenue can be identified separately, तीनों condition fulfill होगा, then we can say this segmenting contract. Do you agree with this? ए कम ऑन, क्या कंप्लीट किया? नेक्स्ट. How to determine profit or loss? We will compare what? We will compare what? Contract revenue with clear. अभी मेरे साथ रहना, मेन स्टोरी अभी स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनने का. हाउ टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हाउ टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, उसका डिस्कशन है. करेक्ट. चलो सुनो इधर. व्योम ने मुझे बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया. बंगलो का लेआउट बनाया, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग एंड हॉल, किचन. फर्स्ट फ्लोर 2 bedrooms, second floor 2 more bedrooms, and then terrace. That is the layout of bungalow which we have decided mutually. He agreed for the same and we have decided contract amount 1 crore rupees. Land उसका है, I will just construct the bungalow. Do you agree with this? या देखो इधर, उसको हम बोलते हैं 1 crore rupees को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट. Which is agreed as per contract. Agreed as per contract. करेक्ट. कितना डिसाइड किया? 1 CR, 1 crore इज डिसाइडेड. दैट इज अवर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट. चलो, ये हमारा रेवेन्यू है, मेरा रेवेन्यू है. कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, इट इज माई रेवेन्यू. बी विथ मी. अभी this bungalow construction activity will take 3 years from here. After first year will get over, he requested me, okay, sir, I want to do some variation in the plan. Ground floor
Along with parking, I want garden also. You understanding? First floor, I need two bedrooms along with balconies. Second floor, two bedrooms with balconies. And on terrace, I need swimming pool with jacuzzi, hot water jacuzzi. I said, okay, no problem. I will do the needful, but I will charge you some additional amount. 10 lakh rupees is additional cost. And he agreed for the same. Okay, fair enough. I will pay you 10 lakh rupees extra. That 10 lakh is my revenue. It is a part of my contract revenue, and that term is called as क्या लिखा बेटा variation in the scope of work. If you are changing the work, due to which there will be an increase or decrease in contract amount. Decrease भी हो सकता है, ये बोलेगा I don't want second floor पे, I want only one floor, and उसके ऊपर terrace, so amount will be reducing. That is called as variation. Variation can be positive, it can be negative. ये वेरिएशन हमारा इनकम रहेगा. डू यू अग्री विद दिस? नीचे एरो करके increase or decrease in contract revenue due to variation in the scope of work. Variation in the scope of work. यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? समझा नहीं समझा? नेक्स्ट, क्लेम्स. क्लेम्स में लिखो. बाय द वे क्लेम्स होता क्या है? सुनना इधर. I had given you the plan. Okay, this is the plan. According to this plan, we will make bungalow. Then we have decided कि flooring decide करने के लिए I will take you to the store. You have to decide which color, which combination you want. Paint color decide करने के लिए I will take you to the store. You have to decide which material you want, which color you want. Interior designing I will take you to store. You have to decide everything. Correct? Flooring work is going on. सब खोद के रख दिया. Digging is done, but consumer is not ready to come to store and finalize that flooring. एक महीने से बोल रहा हूं उसको कि चलो फाइनल करके आते, so I can proceed further with flooring work, but he is delaying this activity. समझ रहा है? My workers are sitting idle on the site. I am supposed to pay wages to them. Agreed? Can I charge additional amount to him for that? Yes. I can claim additional amount to my contractee because there is a delay in work due to his failure of commitment. Correct? I can charge that additional amount, and that additional amount is called as what? Claims. Agreed? Write down. Reimbursement of cost from customer. Which is not included in contract price.
not included in contract price. Example, cost incurred due to delay from the customer. Cost incurred due to delay from the customer. बोलो यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? लास्ट, incentives. incentives में लिखो additional amount received or receivable. E, performance standard and deadline are met. समझाइए? बंगलो बनाने के लिए 3 साल दिया था, मैंने बोला 2 साल में नहीं, 2 साल 10 महीने में बना के दिया। 2 साल में बनाया तो इसको डाउट आएगा, करेक्ट? तो 3 साल दिया था, 2 years and 10 months में मैंने कंप्लीट कर दिया। ये बंगलो कंस्ट्रक्ट करने दिया था ना, तो ये रेंट पे गया था रहने के लिए। नाउ ही कैन सेव रेंट 2 months रेंट, तो ही कैन गिव मी इंसेंटिव्स फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। कि चलो 2 महीने का, 1 महीना मेरे को बेनिफिट, 1 महीने का मैं आपको इंसेंटिव देता। एडिशनल अमाउंट विल बी गिवन इफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेट। मैंने 2-3 चीजें ऐसे उनको बंगले में बना के दी ना जो मैंने कमिट नहीं किया। सो आई हैव मेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड मे बी उससे अच्छा बना के दिया विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मे बी बिफोर दैट। सो इंसेंटिव्स कैन बी गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्टर। वो भी कॉन्ट्रैक्टर का एक रेवेन्यू रहेगा, इनकम रहेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? इधर तक क्लियर एवरीबॉडी? सच्ची बोलो। हाँ, अभी ये जो 3 इनकम है ना, लास्ट वाले 3, दिस दिस एंड दिस, ये 3 इनकम, ये 3 इनकम का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। कि ये 3 इनकम रिकॉग्नाइज कभी करेगा। 3 इनकम का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। 1, कस्टमर शुड एक्सेप्ट क्या, यस आई विल पे वेरिएशन, क्लेम्स और इंसेंटिव्स। वो हाँ बोलना चाहिए, कुबूल है। We will charge variation, we will charge additional amount for swimming pool, but he should agree for that. Otherwise, I cannot recognize revenue. Hello. And दूसरा, amount can be measured reliably. Amount can be measured reliably. Amount भी मुझे पता होना चाहिए. Otherwise, I cannot recognize revenue. Do you agree with this? तो incentives receipt basis पे record करो. Incentives if it is decided from the beginning, so you can think हाँ okay, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया इफ यू विल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन 2 years and 10 months with same quality, maybe more better quality or better quality, correct, then I will pay you 5 lakh extra. पहले से लिख के दिया है तो यू कैन कंसिडर इट। सर पता ही नहीं है, लास्ट में पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, देन डोंट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट बेसिस। फेयर इनफ? बोलो समझो। देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में नंबर 1, इट इज प्रोबेबल
that customer will accept. It is probable that customer will accept, and amount, second में लिखना, amount can be measured reliably. Amount can be measured reliably. इधर तक समझा कि नहीं? Everybody clear? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तक समझा? पक्का? अभी क्या आएगा? Contract cost includes कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्लियर है ना? 4 रेवेन्यू कौन से रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम्स, इंसेंटिव्स, या इधर कौन से कॉस्ट इंकर करेंगे हम लोग? क्या लिखा? डायरेक्ट कॉस्ट और स्पेसिफिक कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए लगते हैं. बोलो क्या क्या लगेगा? कम ऑन, विच कॉस्ट वी विल इंकर? मटेरियल कॉस्ट, परफेक्ट. बोलो विच इज अदर वन? लेबर नहीं बोलने का, साइट लेबर कॉस्ट. बोलो और मशीनरी, अगर नहीं, हाँ इक्विपमेंट्स, आई कैन से मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. इफ इक्विपमेंट्स हमारे खुद के रहेंगे देन डेप्रिशिएशन विल बी अवर कॉस्ट, एंड हमारे नहीं है तो हमने रेंट पे लिए रहेंगे तो हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट विल बी अवर कॉस्ट. डू यू अग्री विथ दिस? और एक्सेट्रा, बराबर है, ये स्पेसिफिक है. फिर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. एट्रीब्यूटेबल समझता है? ओवरऑल कॉस्ट इनकर किया रहेगा और ये प्रोजेक्ट को हम थोड़ा कॉस्ट अपोर्शन करेंगे. ओवरऑल वी हैव इनकर्ड, आई कैन से इंश्योरेंस कॉस्ट. जितने भी प्रोजेक्ट चालू है मेरे, आई हैव टेकन इंश्योरेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स टुगेदर, out of which part of the insurance cost is attributable to particular project. No,
That cost will be specifically related to project or attributable? एट्रीब्यूटेबल. ओवरऑल प्रोजेक्ट का मैंने इंश्योरेंस लिया है, उसमें से थोड़ा इसको एट्रीब्यूटेबल है. देखो इंश्योरेंस कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, अदर कॉस्ट, चार्जेबल एज पर एग्रीमेंट. ये समझ आया? सच बोलो, इधर तक क्लियर एवरीबॉडी? अभी क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सक्लूड्स. बोलो क्या आएगा? एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सक्लूड मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में नहीं जाएगा. ये कौन से पीएनएल में जाएगा? जनरल पीएनएल में जाएगा. ये कॉन्सेप्ट पता है आपको कि नहीं पता? नहीं, सुनो इधर. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आई हैव माई ओन बिजनेस, मेन बिजनेस इन मुंबई. To determine profit or loss of that business, I will prepare trading and P&L account for Mumbai. Agreed? I have one more business in Pune. In Pune, I have branch. Now, to determine profit or loss of that branch, I will open branch account and I will determine profit, which you will learn in branch account chapter. In Chennai, I have consignment business. You know consignment? क्या होता है? It is agency business. We will give goods, we will consign goods to agent. Agent will sell it off in the market and he will deduct commission and he will send back remaining amount. समझा? That is consignment business. पक्का clear? Hello. For consignment profit or loss, Chennai consignment business, profit or consignment profit or loss, I will open consignment account. In Bangalore, I have joint venture business. I will open joint venture account to determine profit or loss. कुछ समझ रहा है? In Ahmedabad बहुत डर लगता है. सूरत. In Surat we have departmental store. I will open departmental trading P&L account there and I will determine profit or loss.
and all this profit or loss will be transferred to general P&L, and that P&L is organization's P&L. मेन बिजनेस का ट्रेडिंग P&L का भी प्रॉफिट जनरल P&L में जाएगा. Consignment business profit will go in general P&L. Branch profit will go in general P&L. Departmental profit will go in general P&L. Are you understanding this? ये सब कनेक्ट होना चाहिए. जनरल P&L क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का P&L. बैलेंस शीट किसका बनता है? ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट. ब्रांच का बैलेंस शीट नहीं बनेगा, जॉइंट वेंचर का बैलेंस शीट नहीं बनेगा, कंसाइनमेंट का बैलेंस शीट नहीं बनेगा. बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा. वन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव नंबर ऑफ बिजनेसेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yeah. So general P&L is organization's P&L. I have one contract, construction contract in Mumbai, Kolaba. उसका profit or loss will be determined by preparing contract P&L account. और वो profit or loss किधर transfer करेंगे? General P&L. So here the discussion. Have you understood this part? This is from macro view. See, I still remember. When we were studying no, तभी एक क्वेश्चन हम करते थे कंपनी फाइनल अकाउंट में. फाइनल अकाउंट में अभी ये सब हायर लेवल कुछ है ही नहीं, आपको बहुत टाइम पास रहता था. उसमें दो एडजस्टमेंट दिए थे, इतने बड़े बड़े एडजस्टमेंट थे. एक जॉइंट वेंचर बिजनेस का एडजस्टमेंट था, एक कंसाइनमेंट का बिजनेस, कंसाइनमेंट बिजनेस का एडजस्टमेंट. क्या करने का था पता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के जॉइंट वेंचर प्रॉफिट वी नीड टू डिटरमाइन एंड ट्रांसफर टू P&L, जनरल P&L. कंसाइनमेंट अकाउंट वर्किंग में बनाओ, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करो एंड ट्रांसफर टू P&L. दो एडजस्टमेंट, लिटरली एडजस्टमेंट किए गए. उसका फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, उसका पूरा इफेक्ट देने का. अभी ऐसे कोई क्वेश्चन करवाते भी नहीं है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी यूज्ड टू डू. सिंगल एंट्री में अलग लेवल के क्वेश्चन थे. तुम्हारा बहुत सिंपल था, टाइम पास, इधर उधर से बैलेंसिंग फिगर आ जाता था. करेक्ट. सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जनरल P&L क्या होता है, दैट यू शुड नो. अभी यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. मतलब दिस कॉस्ट विल नॉट गो इन कॉन्ट्रैक्ट P&L, देन इट विल गो वेयर? इन जनरल P&L. Cost is already incurred by the organization, it will go in general P&L, not in contract P&L. Understood? Yeah, write down first. General admin cost. Third, research and development costs. यहाँ तक समझ एवरीबॉडी?
Clear? पक्का? रिकॉग्निशन, ये सब जगह पे लिखना पड़ेगा सब. अभी जो नेक्स्ट हाफ एन आवर बात करेंगे ना, विल बी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ एन आवर भी नहीं, मे बी 20 मिनट्स. रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मीनिंग समझता है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज. करेक्ट? हाउ टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. दो ही बात. रेवेन्यू एंड कॉस्ट को तो रिकॉग्नाइज करना. चलो, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, सुन लो अच्छे से. हाउ टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन व्हाट बेसिस? परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. इन शॉर्ट, जितना काम करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है उतना रेवेन्यू बुक करो. करेक्ट? इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. एंड कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट. में पीएनएल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल डेबिट में डालेगा. करेक्ट? कितना, जितना खर्चा किया उसको बोलते हैं एक्चुअल बेसिस. रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन, कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस. लिखो, इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में लिखो, इट शुड बी it should be recognized on percentage completion basis. Contract cost, एक्चुअल बेसिस. ये हर सम में लिखना पड़ेगा. एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस. ये परसेंटेज कंप्लीशन का दूसरा नाम क्या मालूम है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन. कि क्या स्टेज का काम कंप्लीट हुआ है. बोलो, इधर तक समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी क्लियर? पक्का? बोलो. Now next question will arise, sir, how to determine percentage completion? So there are three methods.
फर्स्ट क्या है, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड, मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट काम हुआ है, कैसे कैलकुलेट करने का। तो टोटल कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट में कितना लगने वाला है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन, करेक्ट। एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस्ट विच इज इंकर्ड इन करंट ईयर, so that method is called as what, cost to total cost method. So here percentage completion, cost incurred up to date divided by total cost into 100, that is cost upon total cost into 100. Now the clear everybody? Next, देखो, if nothing is given we will always follow cost to total cost method, correct? Okay, we will decide which method to follow. Organization will decide. क्या प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हो यार। प्रैक्टिकली who will decide? Organization will decide, auditor will decide, accountant will decide which method to follow. कोई भी मेथड फॉलो करेंगे, दैट इज वन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी डिस्क्लोज्ड एज पर AS1। क्या बात करता है, समझता है क्या सर? 2:30 बजे के बाद हम समझता भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, करें? एक मिनट, यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज वन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। इधर 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 क्या लिखा है ये, physical method, physical completion you can say. What is physical completion method? फिजिकली कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है हम खुद फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट? वो कहाँ पॉसिबल है सर, कैसे समझेगा? बंगलो बना रहे हैं, कैसे समझेगा? बंगलो में पॉसिबल नहीं है, नहीं, बंगलो में यू कैन नॉट से सर 2 फ्लोर का 1 फ्लोर हो गया मतलब 50% हो गया, दैट इज रॉन्ग कैलकुलेशन। जो भी काम रहता है ना बेटा, वो प्लिंथ में होता है, बेस का काम है मेन। 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाने का है, 15 फ्लोर हो गया, डज इट मीन 50% हो गया? आंसर इज नो, 80% हो गया। बोलेगा कसं, अरे मेन काम बेस है, बेस 6 महीना लगता है वो बेस डालने के लिए, हर फ्लोर स्लैब डालने को 15 दिन, माई वन कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज से 15 दिन में हर स्लैब पड़ता है। एज ए चार्टर्ड बनना है ना बेटा लाइफ में, याद रखना पड़ता है, यू शुड नो ऑल बिजनेसेस, तो ही तुम सीए कर पाता, बिकॉज अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। यू कैन नॉट से नहीं मेरे को डेबिट क्रेडिट आता है, तो तू अकाउंटेंट है, चार्टर्ड नहीं। यू शुड नो ऑल बिजनेसेस, हाउ कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क्स। इफ यू विल चेक देयर पेमेंट स्कीम ना, तो भी समझेगा। प्लिंथ पे 20% ले लेते, प्लिंथ डाला 10% ले लेते हैं, अरे 34 फ्लोर से 10%, ऐसा अंदर का 10% क्यों ले रहा है? अब तक तो एक भी फ्लोर नहीं बना है। तो सर वही तो मेन काम है, फिर तो 15-15 दिन में डालते जाते हैं स्लैब। और माई वन में तो क्या है, पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, नीचे से पिलर लेके जाने का है ऊपर तक, पूरा पूरा दीवार नीचे से ऊपर जाएगा। पहले सिर्फ पिलर थे ना, 4 पिलर 6 पिलर, अभी नहीं, आरसीसी पूरा दीवार के साथ ऊपर चढ़ता है। इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज यूज करते थे उसमें 20-25 डेज लगता था पर फ्लोर, अभी 15 दिन में बोलते हैं। हमारे उधर कंस्ट्रक्शन चालू है, अब सब इंक्वायरी करते रहता हूं मैं, सब पहचानते हैं।
तो इंफॉर्मेशन लेता हूं बिकॉज आई वांट टू गिव इन द क्लासरूम इफ पीपल आर इंटरेस्टेड, है ना। सो फिजिकल कंप्लीशन कहां पॉसिबल है? बंगलो बना रहे हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, मेजर नहीं कर सकते कि कितना काम कंप्लीट हुआ, करेक्ट। हाँ, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1000 किलोमीटर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1000 किलोमीटर। हमने बोला ओके 5 साल में बनाएंगे, बोलता नहीं नहीं 3 साल में चाहिए। ओके 3 साल में बनाएंगे, दिन रात हमने रोड बनाने का चालू कर दिया, करंट ईयर में 400 किलोमीटर रोड बना दिया। बोलो कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ? 40%। क्यों? 1000 किलोमीटर का रोड है, रोड में खोदना नहीं है, उसमें क्यों बेस चाहिए? रोड बनाने का है, कच्चा रोड है, उस पर डांबर या सीमेंट का रोड बनाने का है मेरे को। 400 किलोमीटर मैंने बना लिया है, 1000 किलोमीटर का टारगेट है। नाउ कैन यू मेजर दिस फिजिकली? यस, वी नो हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड फिजिकली, वी कैन मेजर। दैट मेथड इज कॉल्ड एज विच मेथड? फिजिकल कंप्लीशन मेथड। आई होप यू कैन रिमेंबर विद द एग्जांपल ऑफ रोड, करेक्ट। आप सर बट हमको क्वेश्चन में कैसे समझेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज, तो ले लेने का सीधा सीधा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, दैट इज फिजिकल कंप्लीशन। एंड थर्ड क्या लिखा देखो तो, सर्वे मेथड क्या होता है? when it is difficult to identify कि कितना परसेंट काम हुआ है, we will call experts, we will call engineers, architects, and they will measure how much work is completed, and they will give us certificate. That certificate is called as work certified certificate. They will measure and they will decide कितना काम complete हुआ है, that is work certified. हेलो, लिख दो इधर। वो उनके टेक्निक्स रहेंगे बेटा, इंजीनियरिंग करते हैं तो पढ़ाई करके आते हैं, आर्किटेक्ट्स रहते हैं तो आर्किटेक्चर पढ़ाई करके आए, दे हैव स्टडीड दैट कोर्सेज कि हाउ टू डिटरमाइन हाउ मच वर्क इज ओवर। वही तो काम है वो लोग का, बिकॉज वो लोग पूरा डिजाइनिंग वो लोग ही बनाते हैं। इनफैक्ट जो आर्किटेक्ट मैंने पहले से अपॉइंट किया रहेगा वही सर्टिफिकेट देगा आके कि कितना परसेंट काम हुआ है। इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कौन सा रहेगा? कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, ये हमें ही फाइंड करना पड़ता है। प्रैक्टिकली फिजिकल मेथड पॉसिबल है इन केस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। सर्वे मेथड कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है? इफ यू हैव आर्किटेक्ट यू विल गेट सर्टिफिकेट, यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मच वर्क इज ओवर। लिखो, इन दिस expert will be called and he will certify the work completed. बरोबर, बहुत बारीक था तो थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड कर देते हैं। कहाँ जाएंगे बारिश में अभी? हाँ, मेरा काम नहीं, मेरा लेक्चर है, कनेक्टिंग लेक्चर। ऑफ कोर्स ऑल लेक्चर्स आर इम्पोर्टेंट। एक मिनट, यहां तक समझा? पक्का? तीनों मेथड क्लियर? ये मेथड क्या के लिए है? परसेंटेज कंप्लीशन फाइंड करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक नोट डाल दो ना इधर। In the absence of information, we will follow cost to total cost method. Cost
टू टोटल कॉस्ट में करो। लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रोविजन। Provision for expected loss. यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में वी हैव टू चेक। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 years. First year is completed. At the end of first year, we realized, okay, I can say 100 crore का contract है. At the end of first year, we realized 60 crore is already spent, and more 50 crore is estimated cost to be incurred. 60 करोड़ ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, 50 करोड़ का और एक्सपेंस होने वाला है। अभी फर्स्ट ईयर के एंड में आई रियलाइज कि यार ये प्रोजेक्ट में तो लॉस हो रहा है, तो ये लॉस का मुझे एज एन अकाउंटेंट क्या क्रिएट करना चाहिए? प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। दैट इज प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, नॉट एक्चुअल, एक्सपेक्टेड। एक्चुअल लॉस तो पीएनएल में खुद दिखेगा, बट जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसका प्रोविजन मुझे करना चाहिए। राइट डाउन, ये लैंग्वेज याद रखना। व्हेन इट इज प्रोबेबल, राइट डाउन, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट will exceed total contract revenue, then the expected loss should be recognized as an expense immediately, irrespective of commencement of work or stage of completion, or stage of completion of contract. ये समझा? See, when it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue, then provision should be created for expected loss immediately, irrespective of the commencement or the stage of completion. कितना परसेंट काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। The moment you will feel के प्रोजेक्ट में लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन करो। क्लियर? पक्का? एंट्री बोलो। परफेक्ट। लाइफ में प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो पीएनएल से क्रिएट करेंगे, बोला था मैंने। whenever we are creating provision, it has to be from PNL. एंट्री बोलो। डोंट से PNL ना, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट। तुम पीएनएल बोलेगा तो जनरल पीएनएल हो जाए। वी विल डेबिट विच पीएनएल? कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर expected
इधर तक समझ? एवरीबडी क्लियर? पक्का? लास्ट पार्ट, इसके लिए हाफ पेज छोड़ दो, लीव हाफ पेज फॉर डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर वी विल लर्न एट अप्रोप्रिएट टाइम, अभी नहीं करना. दैट्स इट, थियरी इज ओवर. सच बोलो, थियरी इधर तक समझा क्या? हाँ, एक बार रिपीट करो क्विकली. रिपीट दैट थियरी स्टार्टिंग से. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स? Construction contracts are specifically negotiated for the construction of a single asset or combination of interrelated assets, or for rendering of services, or for destruction or restoration of assets. सच्ची सच्ची बोलो, समझा के? पक्का? Second, applicability. Standard is applicable to contract objective, determination of profit or loss, and allocation of contract cost and revenue. बराबर है? Types of contracts, two types: fixed price contract, cost plus contracts. Fixed price में price fixed हो जाएगा, correct? And cost plus में contractee will reimburse the cost which is already incurred plus certain percentage, fixed percentage. Agreed? Combining and segmenting contract. Combining में क्या रहेगा? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक ही सिंगल पैकेज मान के उसका डील करेंगे. प्रपोजल सबमिटेड टुगेदर, नेगोशिएशन डन टुगेदर, एंड थर्ड, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड. बराबर है? सेगमेंटिंग में क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एसेट इज कंसिडर्ड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. प्रपोजल सबमिटेड separately, negotiation done separately, cost and revenue can be identified separately. याद रहेगा ये बोलो. इधर तक अपना हुआ कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट. बोलो कैसे फाइंड करने का? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वी विल गेट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स व्हाट? कम ऑन. कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स. बराबर है? हेलो? या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? स्पेसिफिक कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट. स्पेसिफिक में क्या क्या आएगा? बोलो. मटेरियल, साइट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, हायर चार्जेस ऑन इक्विपमेंट, डिजाइनिंग कॉस्ट एटसेट्रा. तो स्पेसिफिकली रिलेटेड रहेंगे कंस्ट्रक्शन. एट्रीब्यूटेबल में इंश्योरेंस कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स. अदर कॉस्ट में क्या आएगा? तो स्विमिंग पूल बनाने का जो एडिशनल खर्चा होने वाला है, दैट विल बी अदर कॉस्ट. समझेगा? वो बोला जिम भी बना के दो सर, टेरेस पे जिम चाहिए, उसके इक्विपमेंट्स का जो खर्चा होने वाला है मैं इसके पास से वो खर्चा रिकवर करेगा, दैट इज अदर कॉस्ट. अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? एनी डाउट से नो? नो. कहां तक पहुंचे? कॉस्ट हो गया. अभी बोलो रिकॉग्नाइज. कॉस्ट एक्सक्लूड्स व्हाट? जनरल एडमिन ओवरहेड्स, फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग, R&D, डेप्रिसिएशन ऑन आइडल प्लांट्स. ये सब जाएगा किधर? जनरल पे. याद रहेगा? पक्का? चलो उसके बाद रिकॉग्निशन. बोलो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करने का? परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करने का? एक्चुअल बेसिस. याद रहेगा? हेलो? उसके बाद परसेंटेज कंप्लीशन कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड, फिजिकल कंप्लीशन, सर्वे मेथड. प्रोविजन, when it is probable, provision कभी क्रिएट करेंगे? when it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue, for expected loss provision is to be created irrespective of work commenced or stage of completion. Agreed? Entry, contract P&L account debit to provision for expected loss. Can you remember entire standard? कैन यू रिमेंबर? कम ऑन मोनिल. नहीं तो पूछ रहा हूँ, अभी मेरे पास है 10-15 मिनट. हाँ हाँ बोल. पक्का? तू आएगा नहीं?
पक्का, बट ये बाय ऐड करके आओ, कंटेंट बाय ऐड करके आओ नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डू। यस सर। पूरा नहीं, एग्रीमेंट में था कि नहीं था? नहीं था तो नहीं है। उधर अदर कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट में रिकवर करेगा? जो एग्रीमेंट हमने अग्री किया है, आई कैन से दैट। और लाइक इसने जो मेरे को मैंने मटेरियल कमिट किया, अभी वो मटेरियल दूसरा लेने के लिए बोल रहा है, तो उसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है। वो भी मटेरियल वेरिएशन ही हुआ ना, तो मैं उसके पास से एडिशनल अमाउंट चार्ज करूँ, करेक्ट? क्योंकि मटेरियल का तो अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल्स आते हैं, हमने पहले कुछ डिसाइड और किया था, अभी कुछ डिसाइड और हो रहा है, तो आई विल चार्ज द डिफरेंस। यस मैम, या यहाँ तक क्लियर? पक्का? अभी सुनो, हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन करते हैं 2। नेक्स्ट लेक्चर में सारे प्रैक्टिकल करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे आएंगे। तुम पहले ट्राई करने वाला है, याद रखना। घर से पहले थियरी पढ़ के आना, मोनियल थियरी पढ़ के आना, तू ही हमारा मेन प्लेयर है इधर, तू कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 13, रीड। मिस्टर श्याम, a construction contractor, okay, undertakes the construction of an, bolo, he has separate proposal raised for to be constructed in the industrial complex. Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify cost and revenue attributable to each unit separately. Should Mr. Shyam treat construction of each unit as a separate construction contract? बोलो, आंसर इज यस। ये सेगमेंटिंग है कि कंबाइनिंग? सेगमेंटिंग। अभी क्या लिखने का इसमें? पहले मीनिंग, फिर इन कंडीशन, फिर प्रूव करके दे देने का, हाँ ये सेगमेंटिंग है। क्या था मीनिंग में, बोलो? When construction contract covers construction of number of assets and construction of each asset is considered as a separate contract. Correct? In condition, proposal submitted separately for each and every contract, negotiation done separately for each and every contract, and third, cost and revenue can be identified separately. पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चे हो ना। as per क्या लिखा है? ये सुनना रे। construction contracts, when the contract covers number of assets and the construction of each asset should be treated as what? Separate construction contract. When separate proposals have been submitted for each asset has been subject to what? Separate negotiation, and cost and revenue of each asset can be identified. Therefore, Mr. Shyam is required to treat construction of each unit as a separate construction contract. समझा कि नहीं समझा? पक्का? Come to question number 14. 13 is already done. 14. अभी ये कुछ नया है। I will read. Mr. X, as a contractor, has just entered into a contract with local municipal body for building a flyover. Have you understood this? As per the contract terms, X will receive what? X will receive additional 2 crores if the construction of the flyover were to be finished within a period of below of the commencement of the contract. ये क्लियर? बोलो। 2 साल के अंदर कंप्लीट किया तो 2 करोड़ रुपया क्या मिलेगा? इंसेंटिव।
Agreed? X wants to recognize this revenue since in the past he has been able to meet similar targets very easily. Is X correct in his proposal? बोलो. दो कंडीशन थे ना, दो कंडीशन क्या थे? कस्टमर शुड एक्सेप्ट इट, कॉन्ट्रैक्टी शुड अग्री फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ये दोनों रहेगा तो ही तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं. पढ़ो. एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. Incentive payments. Can I say question is talking about incentive? Incentive payments are, come on, additional amount payable to the contractor if specified performance standard are met or exceeded. याद आया? For example, contractor may allow, okay, contractee may allow for an incentive payment to the contractor for early completion of the contract. तो incentives देते हैं. Incentives payment are included in the, क्या लिखा है? Contract revenue when the contract is sufficiently advanced and that is probable that specified performance standard will be met or exceeded. अगर सर्टन हो गया कि हम स्टैंडर्ड कंप्लीट करने वाले हैं और एक्सीड करने वाले हैं तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का. द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स पेमेंट कैन बी मेजर्ड व्हाट? रिलायबली. In the given problem, contract has not even begun, hence the contractor Mr. X should not recognize any revenue of this contract. Have you understood this? ये तो कंप्लीट करेंगे तो ये मिलने वाला. इट इज कंडीशनल रेवेन्यू. यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. जब मिलेगा तभी रिकॉग्नाइज करो. डन. क्योंकि अब तक तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ. इट इज नॉट येट बिगन ओनली. सो डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू. सी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना, वो बहुत बड़ा एक टास्क. झगड़े होते हैं बहुत ऑडिटर एंड अकाउंटेंट के बीच. ऑडिटर बोलेगा नो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम. अकाउंटेंट बोलेगा अरे मेरा फ्यूचर इनकम नहीं, अक्रू करंट ईयर में हो रहा है, आई विल रिकॉग्नाइज. इसलिए स्टैंडर्ड आया उसके लिए AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. देयर इज अ फाइट व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है. AS7 में भी रेवेन्यू का बात किया, बट किसका रेवेन्यू? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू. अग्रीड? पक्का? चलो, दो क्वेश्चन किया हमने. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अभी मेरे को क्या चाहिए सुन लो. अपना लेक्चर कल ही है ना? हाँ, आप पूरा थियरी एक बार पढ़ के आए. थियरी पढ़ के आएगा एंड अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन थिंक अबाउट क्वेश्चन 1, 2 एंड सो ऑन. थिंक अबाउट. आई थिंक सो आपको नहीं आएगा, बट आप एक बार ट्राई करना है तो रफ में पढ़ के ट्राई कर सकते हो. डन. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय. टेक केयर.